बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद क़ालल्लाहु तबारक व तआला क़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाहा यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए नबी, आप फरमा दीजिए कि ए मेरे प्यारे बंदे जिन्होंने अपने जानों पर ज़्यादती की, मायूस मत हो अल्लाह की रहमत से। बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं गुनाहों को, और अल्लाह बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है और निहायत रहम करने वाला है। Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran that, O my servants, say on my behalf, O my servants of mine who have acted recklessly against their own self, who have transgressed themselves, who have done so much guna, do not despair of Allah's mercy, do not lose hope of Allah's mercy. Surely Allah Ta'ala will forgive your sins. Surely Allah is the one, the most forgiving and the very merciful. इस आयत के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फ़ज़ल से काफ़ी गुफ्तगू हुई है, जिनका खुलासा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत बहुत ही वसी है। इतना वसी है कि हमारे जहन उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ये आयत सबसे ज़्यादा उम्मीद वाली है, और ये आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह बिल्कुल माफ़ करने वाले हैं, माफ़ी को पसंद करते हैं। बावजूद कि अगर कोई बहुत गुनाह किया फिर भी अल्लाह ताला उसको माफ़ करने वाले हैं। उसके मुताल्लिक कुछ एग्ज़ाम्पल, कुछ मिसाल भी बताई गई, और आज उसका खुलासा इंशाअल्लाह बयान करेंगे और अल्लाह की रहमत को हासिल करने का तरीका क्या है। So regarding this ayat, alhamdulillah, we've had many discussions on this. In khulasa, in conclusion to this ayat number one, this ayat is the most hopeful ayat in the Holy Quran. Secondly, Allah subhanahu wa ta'ala's mercy is so vast that a person's mind can't comprehend. And we learned this through the examples, like yesterday I mentioned the incident of the person who killed 99 people, and through the examples we learned in the past. And Allah subhanahu wa ta'ala through this ayat is telling us, I will definitely forgive, I want to forgive. Despite how much guna you have done, I will still forgive you. Allah subhanahu wa ta'ala की रहमत का कोई हद नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने नाम के ज़रिए से उसको वाज़ेह फरमाया। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला निहायत मेहरबान है, बहुत सखी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा बुरबाद है, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला देता है फिर भी माफ़ करता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला बावजूद लोग गुनाह करते हैं, बहुत गुनाह करते हैं, छोटे बड़े गुनाह करते हैं, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत दिखाने के लिए तैयार है और माफ़ी देने के लिए तैयार है और माफ़ करने के लिए तैयार है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला's mercy is limitless, and Allah subhanahu wa ta'ala has clearly shown this through His beautiful names. For example, Allah subhanahu wa ta'ala is the most compassionate, the most kind. Allah subhanahu wa ta'ala is the most generous. Allah subhanahu wa ta'ala will give and give and give. We will get tired in taking, but Allah subhanahu wa ta'ala will not get tired in giving. And Allah subhanahu wa ta'ala, when He gives, it does not make His treasure go down. And Allah subhanahu wa ta'ala is the most forbearing. Amount of guna, disobedience that's going on, even Allah ta'ala is tolerating this. The shirk that is taking place, those that are not worshipping Allah ta'ala, those that are disobeying Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala is tolerating this, the most forbearing. And then Allah subhanahu wa ta'ala gives me and you. Despite giving us, we meant to appreciate this, we don't. Allah still forgives us. And we commit so much guna. Despite that, Allah subhanahu wa ta'ala is ready to show His mercy, and Allah subhanahu wa ta'ala is ready to forgive us. और ये आयत जो हमने पढ़ी, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम, ये आयत तरगीब देती है हमको कि अल्लाह की रहमत हमेशा मांगना चाहिए। This ayat that we've prayed, it tells us, encourages us, it motivates us that we should always ask for Allah's mercy. अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम है कि हम बहुत गुनहगार हैं और हम बार बार गुनाह करते हैं, फिर भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला
ने फरमाया कि मेरी उम्मीद से, मेरी रहमत से कभी भी ना उम्मीद नहीं होना. Allah Ta'ala acknowledges this, that we are very sinful. We disobey Allah Ta'ala so much. Despite it, Allah Ta'ala is still telling us, do not lose hope of my mercy. Final thing is, how can we acquire Allah Subhanahu wa Ta'ala's mercy? How can we acquire Allah Subhanahu wa Ta'ala's mercy? So the first thing is to do dua to Allah Subhanahu wa Ta'ala. हमेशा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ मांगना है. और कुरान में अगर हम देखेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी की तरगीब दी है. मिसाल के तौर पर रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना, कि या अल्लाह ताला हमने अपने नफ्स पर जुल्म किया. रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना, अगर आप माफ़ ना फरमाएंगे और रहम ना फरमाएंगे तो हम खसारा उठाने में से हो जाएंगे. इसी तरह अल्लाह सुबह दूसरी आयत, रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन. रब्बिग़फिर, ए मेरे अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, वरहम, रहम फरमा, व अंत खैरुर राहिमीन, और आप बेहतरीन रहम करने वाले हैं. इसी तरह वाफ़ु अन्ना वग़फिर लना फिर वरहमना, वहाँ पे भी आखिर में सूरह बकरा वरहमना. So in the Quran, the first way of acquiring the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is to ask from Allah subhanahu wa ta'ala's mercy. And the three ayahs I just mentioned, all of them have وَتَرْحَمْنَا, mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. Secondly, we should seek a lot of forgiveness. Ask forgiveness from Allah ta'ala. Always ask forgiveness. And also cry and beg in front of Allah subhanahu wa ta'ala. We should ask from Allah when we do dua from the bottom of our heart, and we should try to cry, share some tears in front of Allah subhanahu wa ta'ala. This will create the mercy of Allah. This will acquire the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. That's the first thing. So doing dua. Secondly, always have sincere hope in Allah subhanahu wa ta'ala's mercy. Always. Thirdly, इसी तरह ज़मीन वालों पर रहम करें. We should have mercy on the zameen, on the person of people of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as mentioned, to the nearest effect, that show mercy to others. As in, be merciful on those on the earth, Allah subhanahu wa ta'ala will show mercy upon us. So if we are merciful to others, to the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will show mercy upon us. Also, give sadaqah, give charity. Forgive others. Is to harm, forgive someone. By forgiving others, forgiving each other, Allah subhanahu wa ta'ala will send mercy. Pray Durood Sharif. Man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashra. The person who prays one Durood Sharif, Allah ta'ala will send 10 mercy to this effect. So pray Durood Sharif. Also help the poor. By helping the poor, those that are gharib, Allah's mercy will come down. Also listen to Quran. It says in the Quran, وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. When the Quran is read, وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ, listen attentively. وَأَنصِتُوا, stay quiet. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, so Allah's mercy comes upon us. So we should make the habit, of course, praying Quran is very important. We should be praying Quran. We should also make the habit of listening to Quran. At home, whenever, at home as well, when we're going somewhere in the car, put Quran on. The more Quran we listen to, the more mercy of Allah subhanahu wa ta'ala will come. In our home, put Quran on. And when we're going to work, if our children in the car, put Quran on. Even in our children, make them listen to lots of Quran. When our children listen to Quran so over and over again, the love of Quran will come into their hearts. We see, the more we make our children listen to the Quran. So even it's very simple. What sabak have you got? Okay, my sabak's on third para. Okay, put third para on YouTube. Put Sheikh Shudais on, or Sheikh Shuraiman, or some good, very good Imam, Sheikh. So many Imams now. There's so many Imams in Makkah, Medina. And you say to your daughter, your child, your son, okay, listen. And make them listen. Slowly, you will see one day, you will see your child, he'll imitate that. Exactly the same as that Sheikh. Yes, make our children listen to Quran. A couple of years ago, and he also came here last year. I forgot the name, not in my mind. The Imam is from Pakistan. He studied in Medina. He can imitate 99 Imams. 99. He came last year to our masjid as well, that Imam. He can imitate 99 Imams. So when we went Big Nal to Hidusa, when he came a couple of years ago, he mentioned, we mentioned this, that look, make our children listen to lots of Quran. So for tune purpose, to make them pray with tune, to make them pray with passion, make our children listen to Quran. And everyone, we should listen to lots of Quran.
So you should make a habit of listening to Quran. So وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. By listening to the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mercy comes down upon us. So this is a way of acquiring that mercy. And finally, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has done dua for that person who prays the 4 rakat sunnat ghair muqida of Asr Salah. He said, may Allah have mercy on that person who prays the 4 rakats sunnat ghair muqida of Asr. Yeah, Nabi says, especially in dua. So another way of acquiring the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is making the habit, the 4 further of Asr, before that the 4 sunnat ghair muqida, by praying that. Nabi says some dua is for that person. May Allah subhanahu wa ta'ala's mercy be on that person, mentioned in Tirmizi Sharif. So today, in conclusion, the topic that we were learning is acquiring the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. We should never ever lose hope of Allah's mercy. And this can be general. So general means a person does dua to Allah ta'ala, always asking from Allah subhanahu wa ta'ala. But he thinks himself Allah is not accepting. But never lose hope, Allah will accept. It could be something else. He's working, he's giving da'wah to someone. He's calling someone to the path of Allah subhanahu wa ta'ala. He's working very hard. Don't lose hope. He might not come on the path 1 day, 2 days, maybe a year later someone will come. But never lose hope of Allah subhanahu wa ta'ala. In general, never ever lose hope. And our deen is full of hope. We should never lose hope of Allah subhanahu wa ta'ala. A person might go through patches sometime. Turn back to Allah subhanahu wa ta'ala. Never lose hope of Allah's mercy. Turn back and can be connected with Allah subhanahu wa ta'ala. And the month of Ramadan is the best opportunity where we can connect and with Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की रहमत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए. अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह की ख़ास रहमत कामिला हम सब पर नाजिल फरमाए. हमको हासिल करने की तौफीक अता फरमाए. सुब्हानल्लाह बिहम्दिही सुब्हानकल्लाह बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.